morning students. Hope you all are watching videos and completing your classwork. So let's begin our today's class. Pair of linear equations in two variables. Exercise 4.1. Seventh question. In previous video we have completed sixth problem. So we are going to start with the seventh question. I'll just read the question. When I am reading the question, I want you all to keep your textbook and even you look at the textbook so that it will be much more clear. Okay, seventh question. We have a linear equation. 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. We have a linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables x and y such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. Now write two more linear equations so that one forms a pair of parallel lines and second forms a coincident lines with the given equation. See, if you read the question, आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन कुछ भी टफ नहीं है. उन्हें आपको एक आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उन्हें दे दिया, एक इक्वेशन दे दिया, linear equation. He wants us to construct another equation such that one should be an intersecting. इसके साथ एक और एक पेयर अपने को बनाओ बोल रहा, इसके साथ एक और एक पेयर अपने को बनाओ बोल रहा, such that it is an intersecting line and coincident line and parallel line. तो चलिए सबसे पहले intersecting line का अपन फॉर्मूला डालेंगे. a1 by a2 not equals to b1 by b2. ओके, ये आपका इक्वेशन है. अब देखिए माँ, अब हम 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 ये आपको दे दिया उन्हें. अब दूसरा इक्वेशन अब हम कैसा बनाएंगे, देखिए माँ, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर जो अपने a1 2 दे दिया, अब आप a2 कुछ भी ले लीजिए माँ, 3x प्लस माइनस आपकी मर्जी, आप यू कैन राइट एनीथिंग, 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. This you are going to write it on ones. See now, 2 by 3, a1 by a2, that is 2 by 3 is not equals to b1 by b2, that is 3 by 2. Therefore, the given pair of linear equations, the lines are intersecting. The lines are intersecting lines. With this equation, we conclude that the lines are intersecting lines. Similarly, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ये आपका क्या है, गिवन इक्वेशन है. अब आपको कोइंसिडेंट लाइन बनाओ बोला. कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला क्या है माँ, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2. चलिए पूरे इक्वल रहना है माँ. अब आपको इक्वल रहना है, ये जो भी है माँ उसका डबल कर दे के लिख दो, इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो, सो इट विल बिकम अ 2 2s are 4x plus 6y minus 16 is equals to 0. Now you check a1 by a2, that is 2 by 4 is equals to 2 by 4. I'll change the pen. 2 by 4 is equals to 3 by 6 is equals to 8 by 16. Cancel. 2 1s are 2 2s are, 3 1s are 3 2s are, 8 1s are 8 2s are. Therefore, the lines are coincident line. That means when all are equal. Now come back to the parallel line. Parallel line का क्या है हमारा condition? Lines to be parallel. a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. अब आपका given equation क्या है? 2x plus 3y minus 8. Now you are going to construct another equation in such a way that it should satisfy this condition, a1 by a2. That is same, आप कुछ भी लिख दीजिए, ये भी, that is 4x plus 6y, ये दोनों इक्वल रहेंगे, माइनस अब c1 by c2 आप चेंज कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 0. That is 4x plus 6y minus 6, a1 by a2, that is 2 by 4 is equals to 3 by 6 and c1 by c2 is not equals to 8 by 6, that is minus 8 by minus 6. Okay, 1 by 2 and
8 by 3 when you cancel it becomes 4 by 3. क्या कंक्लूड हो रहा माँ? A1 by A2 is equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2. Therefore, the lines are parallel line. Depending upon this condition, you have to construct another equation such that it should match all the conditions that it is an intersecting line, coincident line or parallel line. This is your 7th question. I am going to read 8th question. More 2 questions are there, that is 8 and 9. With this the exercise will be completed. Okay, let's move to the next problem. Yeah, I am reading the question. The area of a rectangle gets reduced by 80 square units if its length is increased by 5 units and breadth is increased by 2 units. If we increase the length by 10 units and decrease the breadth by 5 units, the area will increase by 50 square units. Find the length and breadth of the rectangle. अब आपको क्वेश्चन को देखे तो कुछ की दिख रहा होगा. Very simple, I'll explain. Let us suppose length to be L and breadth to be B. Length and breadth हम suppose कर दिए. ठीक है. Area of a rectangle formula बोल दो मैं पहले. Area of a rectangle. Area of a is L into B. हाँ. अब यहाँ क्वेश्चन क्या है देखिए माँ. The area of a rectangle get reduced by 80 square centimeter. The area get reduced by 80 square centimeter if the length is reduced by 5 units. So length क्या रहेगा माँ? Length अगर length is reduced, L is reduced मतलब minus subtraction reduced by 5 units and breadth to be increased by 2 units. उन्हें क्या बोल रहा? लेंथ हम reduce करें और breadth हम increase करें. Area is getting reduced by how much? 80 square centimeter. That is area क्या है बोल रहा हूँ उन्हें? Very lengthy problem. Area is getting reduced by 80 square centimeter. Okay. Now see area formula. What is area formula? L into B. Area is equals to L into B. चलिए L क्या है माँ बाप का? L minus 5. ब्रेथ क्या है मैं आपका? B plus 2. एरिया क्या है मैं आपका? LB minus 80. LB minus 80. Now multiply L into B, that is LB. Multiplication है L into 2. L into 2 12. B into 5, that is minus 5B. Minus 5 2s are 10. is equals to LB minus 80. इधर से LB कट हो गया. बचा क्या माँ? माइनस 10 को इज इक्वल टू के इधर आते क्या हो जाता माँ? प्लस 10 हो जाता. दैट इज 2L माइनस 5B इज इक्वल्स टू माइनस 80 प्लस 10. That is 2L minus 5B is equals to minus 70. This becomes your equation 1. This is equation 1. Similarly, we are going to frame an equation 2. To frame equation 2, now let's continue to frame the equation 2. If we increase the length by 10 units, and decrease the breadth by 5 units, increase the length. Second case, see for second equation, this is for second equation. If we increase the length by 10 units and decrease the breadth by 5 units, the area will increase by 50 square units. 50 square units. चलिए L into B formula. Area of a triangle is what? Area of a triangle is L into B. That is L plus 10 into B minus 5 is equals to LB plus 50. Multiply L into B. LB minus 5L plus 10B minus 50 is equals to LB plus 50. यहाँ से LB कट गया. क्या बचा माँ? minus 5L plus 10B
माइनस 50 इज इक्वल टू के इधर आते क्या हो गया हमारा प्लस 50, दैट इज 50 प्लस 50 दैट बिकम्स 100. 5L प्लस 10B इज इक्वल्स टू 100. आप देखिए हमारा ये सब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, सो वी कैन डिवाइड बाई 5 सो दैट वी कैन गेट अ सिंपलेस्ट आंसर. सॉल्विंग कर लिए ईजी रहता. 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 20 जा 100. सो इक्वेशन क्या आया हमारा माइनस L प्लस 2B is equals to 20. This becomes your equation 2. Now what we have to do? Solving equation 1 and 2 to get the value of length and breadth. Solving equation 1 and 2. What is equation 1? Equation 1 क्या था आपका 2L minus 5B is equals to minus 70 and equation 2 क्या है आपका L minus L plus 2B is equals to 20. अब सॉल्विंग 1 and 2 कर रहे हैं. कैसा करना है हम आप लोगों को पता है, ये हमको L वाले कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है. इक्वल करने के लिए क्या करना है, हमारा नीचे वाले का ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को नीचे वाले टर्म से. सो 2L माइनस 5B इज इक्वल्स टू माइनस 70 माइनस 2L प्लस 4B इज इक्वल्स टू 40. Now cancel, plus and minus get cancel. 5 में से 4 गया, that is minus 1B is equals to minus 40 ना 50 60 70 minus 30. Minus minus get cancel and B is equals to 30. We got the value of breadth as 30. After getting the value of breadth, we have to find length by substituting B is equals to 30 in any equation your wish. आप कौन से भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं. अब आप कौन से इक्वेशन में डालना चाह रहे हैं, सिंपल इक्वेशन ले लीजिए माँ, दैट इज माइनस L प्लस 2B इज इक्वल्स टू 20. सो दैट इज माइनस L प्लस 2 इंटू B की वैल्यू क्या होगी 30 इज इक्वल्स टू 20 माइनस L प्लस 3 2 जा 6 60 इज इक्वल्स टू 20. सो माइनस L इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल टू के इधर आते क्या हो जाता माँ माइनस. सो माइनस L इज इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस माइनस कैंसल L इज इक्वल टू 40. Therefore length is 40 and breadth is 30. In this way you have to conclude the answer. Now let's move to the 9th question. With this we will be ending this exercise. Okay, 9th question, if you listen, it's very easy, it is very interesting question, even it is very interesting and simple question. Okay, 9th question. In 10th class if 3 students sit on each bench, one student will left. If 3 students sit on each bench, one student will left. If 4 students sit on each bench, one bench will be left. Find the number of students and number of benches. Okay, I'll just explain the question. First I'll write this. Let number of students be x. Number of students क्या है हमारा x. And number of benches be y. चलिए अब according to the problem सुनिए आप. 3 students sits on each bench. 3 बच्चे अगर एक बेंच पे बैठे, so what will happen? One bench. If 3 students sits on one bench, one student will left. यानी एक बच्चा बच जाता, ये स्टूडेंट्स में से एक बच्चा. 3 students sits on one bench, one student will left. So this is your equation 1. हम इसको एक ऑर्डर में लिख देंगे माँ. माइनस x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1. इक्वेशन 1 क्या करें माँ, हम लोग कुछ भी नहीं करें, खाली प्लस 1 को इज इक्वल टू के इधर ले लेके आ गए, वो माइनस हो गया. दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन. इफ 4 students sits on each bench, 4 students sits on each bench, one bench will left. One
bench will left if 4 students. Yeah, second equation will frame if 4 students sits on if 4 students sits on one if 4 students sits on each bench, one bench will left. 4 students sits on each bench, okay, one bench will left, but students will covered. पूरे बच्चे तो बैठ जा सक रहे हैं लेकिन एक बेंच रह जा रही. If 4 students sits on one bench will be left. This way you have to put the equation. आप 4y minus 1 नहीं लिख सकते, एक बेंच बच जाती जो वो एक बेंच पे 4 बच्चे बैठने का रहता है, इसलिए 4 into y minus 1 is equals to x. Now multiply 4y minus 4 is equals to x. इसको एक ऑर्डर में लिख दो माँ, इसको एक ऑर्डर में लिख दो. माइनस एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस इज इक्वल टू किधर आते क्या हो जाता माँ, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 4. दिस इज इक्वेशन 2. सॉल्विंग 1 and 2. सॉल्विंग 1 and 2. चलिए सॉल्व कैसा करना है देखो. माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1. x minus 4y is equals to minus 4. We are not going to change the sign क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस है. चलिए 3 में से 4 गए तो माँ माइनस 1y is equals to minus 5. माइनस माइनस get cancel, so y is equals to 5. So number of benches कितने आ गए माँ, 5 आ गए. Now we have to find the value of x. x की वैल्यू क्या कैसा फाइंड कर रहे हैं माँ, substituting the value of y, substituting y is equals to 5 in any equation. आपकी मर्जी, आप जिसमें चाहे उसमें आप डाल दे सकते हैं. मैं है सो ये इक्वेशन में डाल रही हूँ, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 1 में डाल रही हूँ. सो माइनस एक्स प्लस 3 into 5 is equals to minus 1. माइनस एक्स प्लस 15 is equals to minus 1. Minus x is equals to minus 1 minus 15. Minus x is equals to minus 16. Minus minus cancel. So x is equals to 16. Therefore number of students हम क्या suppose कर रहे थे माँ, number of students x that is 16 and number of benches that is 5. Here the exercise is completed. That is all for today. Complete your classwork. Have a good day. Bye.